what is the full form of ETABS? Sir, extended three-dimensional analysis building system. Great. Why you left your previous job? Sir, I just interested to learn more about the structure, and I'm just quite stuck in the MEP. I'm not using 100% of my brain. I feel that, so that's why I'm just try to change my domain, and I feel that I can do much better in the structure department. That's why. How your previous experience is useful for us? Because sir, I know the where we have to give the false ceiling sunken, and what is the arrangement with the MEP and coordination with the architectural drawing, structure drawing. So this can help uh, in the my present domain, sir. Okay. What's your salary expectations? Sir, 4.5 4, LPA per 4, annum. 4 to 4.5 LPA is looking for that. Yes, sir. And why should we hire you? Sir, my capability, my ability, and what I have in a present skill set totally match with the this department, and I'm very confident to do a very great result. And I'm not working. I'm just not only work with the company, but I give the better result for the company, which is very beneficial for the company and myself too, sir. Okay. And how to provide or how to import ETS file into RCDC file? Just tell us the steps. Sorry, sir. How to import ETAB file to RCDC file? How to provide ETF file to the No, RCDC? how to import from ETABs to and export in ETABs RCDC? Getting my question? No, sir. ओके आई सेड कि मींस कैसे हम अपने ETABs की फाइल को RCDC में इंपोर्ट कर सकते हैं. हाउ टू इंपोर्ट ETABs फाइल इनटू RCDC? Sir, first of all, having a file format of etab is .edb, and the file is saved, and after that I have to close the etab and open RCDC structure, and initially we have to mention the project name and the codes and other things. After that we have to go to open and import the file on a particular where the file is totally saved on a particular folder. This is a quite process, I feel so. Okay, great. Thank you so much, Prashant. This was nice talk with you, and you was the up to 15 lectures, right? Yes, sir. Great. Thank you so Thank much. you. Okay. Thank you. Now, Susmita. Yes, sir. Susmita, just tell us about, first of all, introduce yourself. Good evening, sir. Thank you so much giving me this opportunity. My name is Sushmita Deepak Dokhe. I am basically from Shirdi but currently stay in Pune. I did my graduation in last year 2023 in Marathwada Institute of Technology, Aurangabad. After completing my diploma, Government Polytechnic, Jalgaon. Currently, I am pursuing structural internship at Unix Civil under guidance of Er.Akash Pandey, sir. In this course, I include many softwares: AutoCAD, STAAD.Pro, Revit, RCDC. Um, Done. Okay. Susmita, what's your strength? Hardworking, quick learning. Okay. And what's your hobby? Photography, reading, writing. Last time, which book you read? Uh, Bap Manus. Okay. And last time, what you write? I am writing imaginary quotes. Imaginary thoughts, right? Okay. Yes. You pass out year? 2023. 23. What's your salary expectations? Company known As per company norms? because I'm first. Yes, because first time I'm entering structure field. So My company norms is 3,000 per month. Are you comfortable with that? I'm comfortable for internship, only internship for starting. You can say as per industry norms. As per, not company norms, as per industry norms. Company norms I can change, but industry norms I can't change.
गॉट इट? समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? हमें इंडस्ट्री नॉर्म्स बोलना है, कंपनी नॉर्म्स नहीं बोलना है। कंपनी नॉर्म्स तो मेरा कंपनी मैं चेंज कर दूंगा, गॉट इट? एंड आई कैन से टू यू कि जस्ट वर्क इन 3000 ओनली, ओके? एंड सुष्मिता, योर ड्रीम कंपनी नेम, डिड यू नो एनी ड्रीम कंपनी यू हैव इन योर माइंड? Air product. Air product. Just tell us about that company. What you know about that company? I known as only little bit things. This company is in oil and gas related. This is MNC company. Okay. Uh, what is the full form of StatPro? Structural analysis and design program. Design program. Okay. And how to import ETS file into RCDC? Sorry. Okay. And what's your weakness? How many lectures you watched, Sushmita? It is 15. 15 lectures you watched, ठीक है। अभी तुम कहीं जॉब नहीं कर रहे हो, राइट? और थोड़ा सा भी और खुलने की ज़रूरत है, मतलब और ज़्यादा ग्रोथ की ज़रूरत है सुष्मिता। आपने वो कम्युनिकेशन बैच ज्वाइन किया हुआ है? Yes sir. आप उसमें मतलब अपना कंटेंट रखती हैं, मीन्स अपने आस पास रखती हैं? हाँ सर, डेली होता है हमारा कम्युनिकेशन। थोड़ा सा और कम्युनिकेट करने का प्रयास करो, क्योंकि अभी फंस रहे हो आप थोड़ा थोड़ा, है ना? और थोड़ा सा टेक्निकल पे और वर्क करना पड़ेगा फॉर सिलेक्शन। इम्प्रूव हो रहा है पहले से, बट अपने को कैसे है, इंडस्ट्री के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होना है ना, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए अभी थोड़ा और समय है। ओके, तो थोड़ा सा और वर्क करो। बहुत अच्छा कंसिस्टेंसी, तुम प्रयास भी कर रहे हो, मुझे अच्छा लग रहा है, कॉन्फिडेंस भी दिखा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। थोड़ा और करना है, ठीक है? ओके, चलो ग्रेट। नाउ नेक्स्ट इज, थैंक यू सो मच सुष्मिता। एंड नाउ नेक्स्ट इज कौन नेक्स्ट रहेगा गाइस यहाँ पर? पवन, मिस्टर पवन। अच्छा, ओके ग्रेट, पवन इज रेडी। आफ्टर पवन वी विल कम विथ ब्रिंजल। ओके, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, गुड। टीवी तुम बहुत देखते हो कि घर वाले बहुत देखते हैं टीवी? मतलब घर वाले ही देखते हैं, मतलब मैं टीवी नहीं देखता मोस्ट। विच न्यूज चैनल यू लाइक मोस्ट? Which is nowadays I don't watch news channels itself nowadays, but on local I have TV9 and public TV. रिपब्लिक टीवी? Public TV only sir. मतलब I mean local public TV. लोकल, It is लोकल Kannada. न्यूज, local news, Local right? news. Okay, I just thought there is a new one news channel that is called Republic TV, I think. No, Okay, that is international I think. yeah, not I think international, it's national. Maybe Yes, I'm yes. not aware with that, but yes, sometimes like everyone have their own interest, na, to watch some the content which is related to, as you said, local news, like that. So it is good practice, definitely. When you just aware with that, you have a knowledge about the societies, and this is very Yes. important for civil engineers. Civil Yes. engineers But localize. what they do is generally they will go with one topic which is under TRP. They repeat uh, on. it's depend on you, like what you watching. We Yes. are watching that's why they are offering that content, right? Yes. Yes. We are offering Only that. one topic repeatedly full whole day they will They are not wrong, publish. they are not wrong, Yes. we are wrong, Correct. ठीक है? They are मतलब, not wrong. if we don't give any attention, they won't do it. Simple. That's Okay, means simple. like the problem is within us, not in the news channels. I think they are doing their job very well, because their job is to get the money. They are earning, Money and because we are they just have to spending our time. advertise and get money on this. Yes, That's the so whole business itself. yes, so we need to improve ourselves, not themselves, ठीक है? 2 मिनट लगेगा। जिस दिन से हम लोग देखना बंद कर दे किसी एक न्यूज चैनल को, कितने दिनों सस्टेन करेगा? कोई ऑफर ही नहीं करेगा, एड ऑफर नहीं करेगा, सस्टेन कहाँ से करेगी? साल भर का लगभग 35 से 40 करोड़ मेंटेनेंस का लगता है, बैठ जाएंगे 2 साल में, खत्म। Yes. एवरी न्यूज चैनल वी Generally, कैन। I get a very good news in mobile itself. Sir. There is an app called as InShots, which gives almost any news in 60 words itself. So it is a brief news. InShots app. दिस इज App द name is पर्टिकुलर ऐप? InShots. Yes, sir. InShots.
In sorts. Okay. This is like Uh, news or like means News itself, sir, but that gives an a brief, matlab, one and only in 60 words it describes a news. oh, great. In sorts. I'll download that file of that also. It may be like and they offer you in the video form or in the writing form. They offer in a brief itself, sir. Only one picture will be there, half of the mobile, and half of the screen they will cover up with the 60 words of whatever the news itself is. Oh, that's nice. In sort. It gives a very brief about the news, and it is enough for a normal person. Our awareness so that we can maybe Our do awareness. yes that makes it. If we are interested, we can scroll right or left. Then we can view it in a full entire article itself. Okay, I'll upload that. I'll download today. Okay, great. Let's come to the topic, Mr. Pon. You're looking for the job in the structure engineering. So why you want to become a structure engineer first? The reason why I want to be a structure engineer is because I have more understanding about the subjects in structure, and the structure industry is growing very fastly in India, and and even the structural knowledge is very important for a civil engineer rather than having other things, because structure gives us the more confidence about the strength of a building, and other things, interiors or exterior, we can manage, or else if we can Okay. uh, What are the do our different own custom things. what are the different methods to calculate the deflection of any beam? Deflection, moment, double integration method, and another one is a Macaulay's integration method, and another one I forgot. Okay. And what is moment of inertia? Moment of inertia, that is the product of um, mass of an element along an axis, Mass of perpendicular to an axis. perfect. Very good. And what is the use of ETF software? ETAP software is very useful for building systems itself, as the name suggests that it is an extended three-dimensional analysis of building system. The software's major uses is to analyze a building, design a building, and then and detail the building in the software itself. Okay. And it's very useful from other softwares like STAD, because it is more automated and more easy to use. How many lectures you watch? Sir, 34, 15, sir. 14, 15. 14, 14. Great. Okay. What's your salary expectations? Uh, as per the industrial norms. And your dream company name? Sir, L&T, Shapur, G. Pulanji, and Shobha Construction, Prestige, these kind of Great. construction Great. companies. थैंक यू सो मच पवन, दिस वाज नाइस टॉक विद यू. आपकी तैयारी लगभग लगभग ओके है. आई थिंक आपको ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यू देने की, रिजेक्ट होने की और सेलेक्ट होने की. ठीक है, जस्ट कीप फोकस ऑन दैट एरिया. ओके, थैंक यू सो मच. या नो गाइस, क्या बोलते हैं प्रशांत, आप भी परफेक्ट हैं क्योंकि आप दोनों लोग 7 रेटिंग हमारे तरफ से पा चुके हैं. 7 रेटिंग का मतलब होता है नाउ दिस इज द राइट टाइम, जस्ट गो एंड अप्लाई फॉर द जॉब्स एज मच एज पॉसिबल. Now come with Brinjal, and after Brinjal we will do with Bhagyashree. Brinjal, ready? Yes, sir. Good Great. evening, sir. Good evening, ji. Uh, Brinjal, how many lectures you watch in ETABS? 15, sir. Okay, 15 lectures you watch. And what is the use of E2K file formats in ETABS? E2K file used for higher version of ETF file to convert into lower version. Okay, and what's your hobby? Sir, my hobby is crafting. Crafting. Yes. Okay, and Handmade. handmade Handmade. crafting means, okay, got it. From threads you just try to draw something, right? Painting materials using. Okay, that means you have a good knowledge of architectures things, means you have a maybe you have interest in the architecture field also, right? Yes, sir. And okay, Brinjal, which like how many projects you done in the that your ETABS? ETFs only one, sir. Which one? Yeah. I think Apartment.
apartment. You done apartment, QTR also. Yes, QTR, mainly QTR. Only QTR you done till now completely, right? And Yes. Ashish Hotel Archie analysis is done, design is pending. means you just done your approx 2 project, right? Yes. Okay. How much you rate yourself out of 10 in Stat Pro? Uh, 8, sir. Okay. In AutoCAD, In AutoCAD, 9, what because is I have a 2-year experience in okay? AutoCAD also. What is the use of purge command in AutoCAD? Purge command used for to uh, uh, delete the unusable Create layers. unused remove the unused file, right? Yes, sir. Okay. And in AutoCAD, in layers there is a freeze and on off. What is the difference between both? Uh, On off layer we in, 1 minute, sir. Hmm. On off layer used for a uh, Okay, no issue. sorry, You just forget, right? What is the use of replicate command in in ETABS? replicate command used for copy Copy the floor, floors. or Okay, as any beam, or as column. Anyone. okay. In my company, there is a 2-year bonds. Are you compatible to work with us 2-year bonds? Yes, sir. I comfortable. I am If compatible. my expertise, if my If terms and condition if terms and condition are in our favor. in our favor, yes. ओके, थैंक यू सर ब्रिंजल। ब्रिंजल कोशिश क्या करो कि जब कभी भी इंटरव्यू अटेंड करना है तो या तो मोबाइल को स्टैंड बाई एक जगह पर रख दिया करो, ठीक है? उससे तुम्हें कैसे ना तुम्हारा फोकस जो है वहां पर मेंटेन रहेगा। अदरवाइज लैपटॉप यू कैन बी यूज। मीन्स कुल मिला के ऐसे कि कभी अगर कभी इंटरव्यू आपका 1 घंटा चल गया, ओके, तो आपका माइंड जो रहेगा, माइंड रहेगा उसको पकड़ने पर। क्योंकि मैं पहले ब्लॉगिंग वॉगिंग करता था ना, तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो पाते थे चीज़ों को शेयर करने में। इधर हाथ दर्द करने लगता था, खत्म करो यार जल्दी से। तो ऐसे होता है, ठीक है? तो इसलिए याद रखो कि हमें कहीं पे स्टैंड बाई कर देना है। मेरे को कुछ कवर्स ऐसे मतलब कवर वगैरह कुछ ऐसे रख देने का, या फिर लैपटॉप यूज करने का फॉर द इंटरव्यू। ओके, मॉक तो ओके फिर भी मैनेज हो जाएगा, बट उसे मैनेज करने के लिए आपको रेडी रहना चाहिए, ठीक है? ओके सर, ओके। ओके जी, ओके। नो नेक्स्ट चीज क्या बोलते हैं गाइस, अभी भाग्यश्री जी हैं। भाग्यश्री, रेडी? Yes, sir. ओके, भाग्यश्री, हाउ मेनी लेक्चर्स यू वॉच? 13, sir. 13th lectures you was very good. What you learn in lecture number 13? What you learn in that? How to import AutoCAD file in eTab. How to import AutoCAD file in ETABS. What is the process? First, we have to save AutoCAD file in Hmm. DXF lower version, and then open eTab, and then Then we'll forget that, right? yes, Okay. And what is the file format of ETABS? File format like DX ETABS. not Like understood. means like StatPro file format is .std. AutoCAD file format is .dwg. ETABS file format .edb. Okay, sir. देखा होगा ना, फाइल को शेयर किया होगा। हाउ मेनी प्रोजेक्ट्स यू डन इन दैट ETABS? QTR वो भी मेरे इसमें डिजाइन नहीं हो रहा, वो लॉक नहीं हो रहा है, इसलिए हाँ, एनालिसिस वो तक। तुम्हें उसको ना हटा दो, उस वर्जन को। 17 में प्रॉब्लम है, इसीलिए हमने अच्छा, 16 दिया था। 16 इज लाइक अ गुड वर्जन। आफ्टर 16 इफ यू एनीवन वांट तो 2020 अच्छा वर्जन है उसके बाद, ठीक है? तो इसलिए उसको हटा दो, बेटर रहेगा। अदरवाइज कैसे, अभी तुम्हारा ETABS खत्म हो जाएगा, अभी लेक्चर 13 तक तुमने कर लिया ना, और बेनिफिट यस नहीं हुआ तो फिर मतलब क्या निकलेगा, राइट? ओके, सर। एंड which company made the ETF software? ETFs पे तुम्हारी तैयारी नहीं हुई, राइट? ओके, यस in StatPro, how to provide how to do seismic analysis in ETFs? StatPro, sorry, how to do
seismic analysis in StatPro? Tell us the steps. First, we need to go load and definition. Then select seismic. Then select IS 875. Then For seismic 875. IS 1893. 1893, yes. ठीक है, हाँ, फिर 2000. yes. And then वहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, वो याद नहीं आ रहे मुझे. और फिर लोड डिफाइन करना है फॉर एक्सटर्नल वॉल, इंटरनल वॉल एंड लाइव लोड. एंड देन ओके, देखो भाई से क्या होता है ना कि अभी तुम ना कोशिश किया करो कि हर बार अपना वीडियो मॉक दिया करो. तुम कैसे हो रहे, वीडियो मॉक की वजह से कई चीजों में ना तुम ऐसे ऑब्सेस हो जा रही हो. ये पता चल रहा है कि तुम पूरी लग रहा होगा ना, हमें भी रीड हो जाता है कि हम तो सुबह शाम तक यही करते हैं. तो वीडियो मॉक देना इंपॉर्टेंट क्यों है, कल को हम किसी से मीटिंग कर रहे हैं, है ना, तो हम यूज टू रहेंगे उस चीज को लेकर. अब देखो जैसे मैंने अभी उसको बताया ना ब्रिंजल को, कैसे किए रहोगे तो हाथ दर्द करने लगता है. ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, तो उस बेस पे मैंने उसको बताया. तो हमें वीडियो मॉक देने से बेनिफिट क्या होगा कि हमारा जो हेजिटेशन है वो खत्म हो जाएगा, है ना. तो और ये मत सोचा करो कि कोई परफेक्ट है, इस दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं होता. बिलीव करो हर कोई लर्नर है. जैसे तुम अपने ग्रोथ के लिए परेशान रहते हो, वैसे ही यहाँ पर जितने लोग हैं सब परेशान है. इवन मैं भी परेशान रहता हूँ, एवरीवन. बस सबका ये है कि कोई इतने के लिए, कोई इतने के लिए, कोई इतने के लिए, राइट. एवरीवन इज लर्नर, तो कोई घबराना नहीं है. वीडियो मॉक देख के क्या बोलते हैं, अपने आप को कोशिश किया कि कॉन्फिडेंस में ले आना है ना. और थोड़ा सा ना कम्युनिकेट करो इंग्लिश में. थोड़ा कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है. और प्रॉब्लम कैसे होता है, हम सब इंडियन के घर में रहता है प्रॉब्लम, ठीक है. कैसे रहता है कि हम लोग घर में तो तुम लोग जहाँ तक मराठी में बात करते हो घर में, राइट. यस सर. तो यूज टू हो जाते हो उस चीज से. लेकिन अगर कल को हमें अपॉर्चुनिटी मिली किसी अच्छे एमएनसी में, जाना चाहोगे ना अच्छे से अगर जॉब हो तो, है ना. अभी कल एक क्या बोलते हैं लड़की है मुंबई की, सिमरन, उसका इतना अच्छा जॉब है आर्चडीज कंपनी में. एंड लाइक उसका इतना बेहतर है कि उसको केवल 5 दिन ऑफिस जाना, बाकी दिन वर्क फ्रॉम होम है. और वो भी सुबह लॉग इन किया 9 बजे और शाम को 5 बजे लॉग आउट, खत्म, ऑफिस खत्म. ऐसे जॉब मिल जाए तो करना चाहिए चाहोगे. और आर्चडीज एक बहुत बड़ी कंपनी है, तो उसका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है. तो ये कम्युनिकेशन पे काम करो, तुम्हें बहुत फायदा होगा उसका, ठीक है. ये मत सोचो मैं तुमको कुछ नहीं बोल रहा हूँ, सबको ही बता रहा हूँ ये चीज कि एवरीवन जस्ट ट्राई टू वर्क ऑन ए कम्युनिकेशन. और कॉन्फिडेंस से करो, ये नहीं देखना है कि क्या लोग सोचेंगे. अरे छोड़ने दो यार, अगर लोगों को कुछ सोचना होता है तो फिर लोग पता नहीं कहाँ पहुंच जाते हैं ना. हर कोई ही सोच रहा है, छोड़ दो उसको, ठीक है. चलो, ओके, थैंक यू सो मच भाग्यश्री. बस यही चाहूंगा कि कंटिन्यू करते रहो, होगा, इंप्रूव होगा, ठीक है. ओके, यस सर. ओके जी. नाउ नेक्स्ट इज यहाँ पर गए किसका भी, फिरोज जी हैं, फिरोज, मिस्टर फिरोज शेख. ठीक है गैस, कुछ लोग मॉक से गायब हो जाते. दिव्यांशु शर्मा जी हैंड रेज करें, मे बी ही इज रेडी. आफ्टर फिरोज विल कम विथ यू आल्सो, मिस्टर दिव्यांशु. हाँ सर. मिस्टर मिस्टर फिरोज रेडी. Yes sir. Okay, why should we hire you? Because sir, I have experience more than 4 years above experience in the designing field. So I have passionate to work and quick learner. I motivate myself in the talk project. Which IS code we use for seismic analysis? IS 93 2022 and latest version is 2016. 2016. Okay. Yeah. What is the difference between LSM and WSM? So LSM is the up to fracture point ultimate strength we are design, and for the WSM up to elastic limit. Elastic limit for WSM, and for LSM? Up to ultimate strength, sir. Ultimate strength will design. Okay. And difference between short column and long column? Short column and long column difference. Short column is L by is below L by X. I forgot something. It's below 3. I forget. Okay. Where we use route foundation? Route foundation we are used in the mostly column closing is above 35% or 40%. On that condition, we provide rough foundation for better bearing capacity. Okay. What's your salary expectations? My salary expectation is above 65K per month, sir. 65. And your right now your job role is?
My job role is as a site engineer with the assistant charge for the planning, structure, checking for my company. And that means you are fresher for the structure, right? No, sir, I already work in designing. Okay. What was your Oh. role? What was your role in designing? My role is designing is mostly frame structure designing for beam column and footing, and on the other hand, detailing coordination. Uh, that's is my responsibilities. Okay. In which company you done this? I had done in my beginnings. I had done my job in cohort design and building, that is in Infan, and next I had worked 2 years in as a structural engineer in RS Concrete Construction, that also belong to Infan, sir. Okay, great. And how many lectures you was in ETFs? So I have worked up to 10 lectures, sir. Why? Right now my health condition I already mentioned you is not good, sir. Since I cause gas fever, but anyhow I try to complete my lecture, sir. Up Okay, to no issue. Just try to take the rest, but as soon as possible, try to cover yourself and okay, just focus on your works. It will be helpful for you. Okay. Okay. okay, Thank you so please. much, Firoz. Yeah. Now next is okay, ji. Now next is Mr. Divyanshu Sharma is ready. So we'll come with Mr. Divyanshu, and after that we are coming with Prathamesh. Divyanshu Sharma ji ready? Yes, sir. Okay. विष्णु देन प्रथमेश क्योंकि विष्णु पहले आए थे उसके बाद प्रथमेश दिव्यांशु यू वर्किंग राइट नाउ राइट योर जॉब टाइमिंग इज Sir, from 9 to 6, Monday to Friday. Monday to Friday 9 to 6. Okay, Yes, sir. this is the gray hair or like you have Sir, or it's this color sir, it's natural. is natural. Okay, it look like Yes. a color. Some there is a fashion like they are doing that white hairs, right? Okay, great. So Mr. Divyanshu, you 9 to 6. Your job is 9 to 6, right? Yes, yes, sir. If there is urgent work, at submission type, sometimes 8 or 9, and maybe more late. It depend on Work submission. submission. Yes, sir. Okay, good. Yes, sir. And how many Only at modules? time of submission. Okay, what are the Sir, till 13. yeah, what are the things you learned till now in ETABS? Sir, as I watch till lecture 13, I learned basic things like how to construct a beam, column, and slab. After that, how to if we have CAD file, then how to draw grid, and then put that grid on ETABS and construct column and beam according to CAD file. And after that, how to take ETAB file into RCDC, and after that, if we want to provide a stair, then how to provide a staircase and ETABS. And after that, earthquake, how to apply earthquake and how to apply wind load. Okay, and how many seismic zone in India? Sir, there are 5 earlier, but zone 1 and 2 merged together. So for now, there are only 4 zones: zone 2, 3, 4, and 5. What are the different factor for their zones? So they are based on earthquake frequency, which is a algorithm, which is a logarithm. For example, if magnitude of around 6, it's in zone 2. Then on 7, zone 3. No. I don't remember exactly, but it's based on magnitude of earthquake. Okay, basic wind speed of Delhi. Sir, it's 47 meter per second. 47 meter per second. Okay. What is the use of shear wall? Sir, to counter the lateral force, especially if our building is high rise, we use, and or we also use shear wall around lift or staircase. So to counter the lateral or shear force. Great. Thank you so much. दिव्यांशु just try to watch the complete lectures और थोड़ा प्रैक्टिस आपका कम हुआ है ना, प्रैक्टिस Yes, पे sir. वर्क कर लो थोड़ा सा, तो Yes, कैसे sir. कि ऐसे कॉन्फिडेंस अंदर से आ जाए ना, जैसे स्टार्ट में थोड़ा कॉन्फिडेंस आया होगा, ठीक है, फिर Yes, भी sir. Yes, मुझे sir. लगता है कि मेरे हिसाब से अभी आपने कम प्रैक्टिस किया है, मुझे और चाहिए, जी सर. ठीक है, Yes, sir. लेकिन फिर भी जब
कई बार करते हैं तो प्रैक्टिस कॉन्फिडेंस गेन हो जाता है, वो कॉन्फिडेंस ले Yes, sir. आइए, ठीक है? Yes, ओके sir. जी, ओके, थैंक यू सो मच। Thank you, sir. ओके जी, नाउ नेक्स्ट इज मिस्टर विष्णु एंड देन प्रथमेश। मिस्टर विष्णु, Mm. Hello, sir. हेलो। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून जी मिस्टर विष्णु। मिस्टर विष्णु, right now looking for the job in the structure industry. What is structure engineering? Sir, first of all, thanks for giving this opportunity. Um, Structural engineering is a field which deals with a various structural parameter while designing the its location of the site, mass and load diaphragm, and how the load path is going to the structure to the ground, like a slab, top of the building slab to ground up to the footing. How the load path is defined, and checking the like a ponding effect is a have to a structure, how it intensity it will affect into the structure, how to resist the deflections, movements, like that, sir. Okay. uh, What are the job responsibilities of any structure engineer? Sir, actually, the responsibility of a structural engineering is to ensure the structure is stability for construction or not, and how if the problem arrives in the on-site, we will rectify uh, in a short period of time. Um, if licensing with all architecture, construction, and like local like a on-site engineers, like a engineering in charge, they have we have to deal with them and make a work as soon as possible within a time. Okay. And what is the use of StatPro and ETABS Start for from the data. structure engineers? Right, sir. In StatPro, we have to analyze the structure in a like a matrix analysis of structure. It's a completely StatPro under a frame analysis, so for a beams columns, like that. In ETABS, we have to apply a dynamic loads to the structure up above G+8. In StatPro, we have to we can design up to a G plus under the G+8. Why? Because the StatPro is a consist of so many calculations in the StatPro. Its software process is very slow when compared to ETABS. ETABS will make a 3D analysis at the same time. It will show the how uh, the shear wall is applied, how the dimensions are. We can see on when we designing at the time only. How can we reduce the torsion of a building? Uh, Torsion of a building by giving a releases to the secondary beam. Okay. Mm, And what is shear force? Shear force. Uh, when the summation of the forces at the right side of the section or the left side of the section, um, when a structure is unbalanced forces are applied at the section at the beam, at the right side of the section or right side of the element section. Okay. थैंक यू सर विष्णु। विष्णु, थोड़ा सा और करना पड़ेगा, क्योंकि देखो ऐसा होता है, अभी मैं कॉम्प्लेक्सिटी में जा रहा था, तुम हर जगह फंस रहे थे, एक्यूरेसी से नहीं आ पा रहे थे आंसर, राइट? और जबकि Yes. ये आंसर्स कैसे थे कि ये आंसर्स कॉमन है कि पूछे जाएंगे। एंड दूसरी चीज समस्या क्या है कि तुमको लेना है ज्यादा सैलरी, है ना, एज कम्पेयर टू अदर्स। लाइक अदर्स कैन गेट 15, 20, 25, दे कैन बी ज्वाइन, बट यू नीड मोर, राइट? एज सेड टू यू एंड ऑल्सो फिरोज को भी ये चीज़ है, जो भी लोग ज़्यादा सैलरी के एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं, थोड़ा सा उनसे ना कंपनी एक्स्ट्रा मांगती है, राइट? तो थोड़ा सा ना इसको ऐसे कर सकते हो कि चाहो तो गूगल की हेल्प ले लो। वैसे मैंने एक टॉप स्ट्रक्चर्स के क्वेश्चंस का लिस्ट भेजा हुआ है, अगर तुम वहां से चाहो तो वहां से कर लो, एक जगह पेपर पे लिख लो, या फिर क्या बोलते हैं, गूगल से कॉपी कर लो।
कहीं से भी मतलब कुल मिला के क्वेश्चंस जो टॉप क्वेश्चंस है ना, ये उन्हीं में से सब क्वेश्चन है, कोई अलग नहीं है। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पता ही होना चाहिए, है ना। या फिर व्हाट इज हाँ, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग तो कॉमन चीज़ है, और टॉर्जन भी कॉमन चीज़ है। तो जो टॉप क्वेश्चन है ना, उनकी लिस्ट बना के थोड़ा सा रिपेयर कर दो, और इतना परफेक्ट कर दो ओके खुद को कि ये वर्ड तुम्हारे अंदर से आने लगे कि अगर कंपनी ने सिलेक्शन नहीं दिया मुझे, तो ये कंपनी का लॉस है, मेरा लॉस नहीं है। ये वर्ड जिस दिन आ ठीक है गया उस दिन समझ जाओ परफेक्ट हो सर। गया, ठीक है। हाँ जी। Can I tell the shear force when a unbalanced force is applied on the beam, it ओके। will be try to force. Uh, it will be unbalanced by applying the force on the beam. It will try to uh, cut off cut off the section. आंसर तुम सब बता रहे हो, बट कोई भी आंसर ना Uh, एक जो एक्यूरेसी के साथ होता है, accuracy. तो वो आंसर तुम्हारे सारे ही स्टार्टिंग से तुमने सही बताए हैं, बट सब इधर उधर से थे ना। इनको ना लिख के तैयार करना पड़ेगा इनको, और इट विल टेक टाइम। कैसे कि पूरे क्वेश्चंस की लिस्ट कम से कम 50 क्वेश्चन से 100 क्वेश्चन के आसपास आएंगे, फिर उन क्वेश्चंस के एक एक्यूरेट आंसर्स वो भी लगभग आएंगे। कुल मिला के तुम्हारा एक हफ्ता लगेगा। लेकिन एक हफ्ते के बाद ना ऐसा हो जाएगा विष्णु कि मतलब तुम्हें खुद से अंदर से लगने लगे यार बहुत कुछ आने लगा है, ये चीज आना चाहिए। जस्ट लाइक अभी देखो तुमको स्टैट में आ रहा होगा बहुत कुछ, है ना, और ईटीएफ्स में भी आ रहा होगा। वैसे भी मैंने थोड़ा प्लान किया हुआ है आप लोग के लिए। अभी मैं थोड़ा सा मैनुअल की तरफ आप लोग को ले जाने वाला हूँ, ठीक है। तो साथ साथ हम लोग मैनुअल का नॉलेज, जैसे अभी मैं कुछ चीज जैसे मैं पूछा ना, शॉर्ट कॉलम लॉन्ग कॉलम, है ना, तो अभी हम इधर की तरफ लेके चल रहे हैं आपको, जिससे कि थोड़ा सा आपका ना ये पोर्शन भी स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। Long column will buckles. Short column will crush. यस, तो आज हम लोग इसके बारे में डेप्थ डिस्कशन करेंगे। तो अभी कुछ ऐसे टॉपिक्स में हम लोग एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। चलो ठीक है। एक ओके जी। नाउ नेक्स्ट इज मिस्टर प्रथमेश। Thank you, sir. ओके जी, मोस्ट वेलकम मिस्टर प्रथमेश। Yes, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग मिस्टर प्रथमेश, हाउ आर यू? Yes, fine, sir. You join late. Sir, due to the job, I joined. Okay, what's the job responsibilities there? Sir, I'm in execution team where I handle 27-story building in execution. Where yes, sir. Yes, continue. Uh, where I where I look after all the execution field, uh, just like column casting, beam slab, all casting, drawing studies, building, all that activities. Okay, how your current experience is useful for our structures firm? Sir, I have good experience in execution field, so that you can. So I have some great experience in design also. So I have just studied design activities in that execution also. So I have a little bit more information about design, how the design is done, and how it is worked in field. So it can be useful for your organization. Okay, and what's your selling expertise? So, industrial norms, but I am expecting 20% hike from my current CPC. Okay, current CTC तुम्हारा 3 के ऊपर है कि 3 के नीचे है? 3 के ऊपर है सर. 3 के ऊपर है. It's approx 4, right? No sir, 3.5. Wait, approx 4 मान लो. Okay, Yes, sir. so right now you're looking for the like definitely you need to be at least 4.2. It is fair for Yes, you, sir. right? So what are the things you can do in the structures? Means for our consultancy, what are the things you can we do? So in structure we can I can design I can design your structure with safe with safe standards using IS codes, and I can give and long lasting structure with possible safety side. Okay, Prathamesh, in my company there is a 2-year bonds. Are you comfortable to work with 2-year bonds? Yes sir. Yes sir. With my terms and condition, I would like to join with your 2-year bond. You just said with my terms and condition. Yes, तो with ये my ये गड़बड़ हो जाएगा. आपका टर्म्स नहीं हो सकता. आप बोल सकते हैं इफ टर्म्स एंड कंडीशन इन और फेवर. फिर हम पूछेंगे व्हाट्स योर टर्म्स एंड कंडीशन, तो
तो यू विल से द डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशन, फिर मैं उसके अंदर कुछ ऐसा निकाल लूंगा कि ये देखो ये तो तुमने नहीं बोला था, हम ये करना चाह रहे हैं, राइट? यू कैन Yes, sir. से कि Yes, sir. एज पर लाइक इफ टर्म्स एंड कंडीशन इन आवर फेवर, ठीक है? Yes, sir. ये बहुत I इंपॉर्टेंट। will. ओके, व्हाट्स योर हॉबी? Sir, my hobbies is trekking, playing cricket, photography, and cooking. ओके, लास्ट टाइम वेयर यू ट्रैक? Sir, I just want to Sinhagad in Pune, which is located in Pune. I just want. It is very beautiful location, and its history is very strong and very, uh, How many minutes you use for the trekking to complete Siagar Fort? uh, 3 hours, sir. That's too much. Yes, sir. 3 hours. It will be take 3 hours to surround. Lot of things are there. If you are trekker, you can go and just not been sitting in one place. You are if you are at extreme trek level, you just go and feel there what is the history, what is the that location is all about, what are that warriors fought for this country. So that feeling is something else. Yes, for the healings, yeah, definitely you can take, but for the, I just want ki how many minutes you use for the trekkings. So means Trekking 3 hours. 3 hours. Okay. Yes. Now, Mr. Prathamesh, what's your weakness? So my weakness is I am very dedicated to my work. So sometimes it's get hurted. Uh, I am too dedicated to my work. So sometimes it gets hurted me. So that's my weakness. How many lectures you watch in ETAPS? Sir, I just watched 12 lectures. Sorry, 10, 12. 12 lectures. Yes, Okay. थैंक यू सो मच प्रथमेश। थोड़ा सा बराबर पे चलोगे तो अच्छा रहेगा, कैसे है ना, पीछे जाते जाओगे तो थोड़ा तुम्हारा नुकसान होगा उसमें, ठीक है? हाँ सर, और वो थोड़ा सा मेडिकल प्रॉब्लम हो गया था। हाँ, कोई बात नहीं, अभी कवर अप कर चलो लो। बस। दिवाली तक में जितनी भी चीजें हैं ना, एक बार मैं रिवाइज भी करने का समय दूंगा, ठीक है? रिवाइज यस सर। करके एक बार फाइनल पोर्टफोलियो बना के अप्लाई करना स्टार्ट करो। देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ अप्लाई करने के लिए, क्यों? क्योंकि सर अप्लाई कर रहा हूँ मैं। हाँ, क्योंकि आपको स्ट्रक्चर पिछली में, बार जैसे बोला था। हाँ सर बोल। स्ट्रक्चर में समय जो है, सॉरी ओपनिंग्स जो है एक तो कम है, ठीक है? यस अभी सर। देख ही रहे होगे। दूसरी चीज क्या, पैकेज कम है, ठीक है? यस। इसलिए क्या बोलते हैं, मेरा एक वो कहना रहेगा कि अभी से ट्राई करोगे तब जाके अच्छा सही कंपनी में क्लिक हो गए ना, तब तो पैकेज बहुत है। लेकिन सही कंपनी में क्लिक होने के लिए इट टेक टाइम, सबसे ज़्यादा कम्युनिकेशन, उसके बाद एचआर, जो एचआर के, क्योंकि डेफिनेटली जितना एक्सपीरियंस कंपनी वैसे हिसाब से क्वेश्चन पूछती है, ठीक है? तो कोशिश यस करो सर। कि हमारा नियम हो कि हम डेली एक कंपनी 2 कंपनी में अप्लाई कर देंगे डेली, सर मैं अप्लाई कर रहा हूँ सर, अप्लाई ठीक है? कर दे रहा यस करो, क्योंकि उससे ना हूँ। रिस्पॉन्स पता चलेगा कि हम कहाँ पर हैं और कहाँ पर गलती कर रहे हैं। ओके, ओके ओके, सर, ओके, चलो थैंक यू सो थैंक यू। मच। ओके जी। गैस आज आपको पहली बात तो अभी वो आशीष होटल प्रोजेक्ट करने में, कंप्लीट करने में समय लगेगा, सो आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एनी प्रोजेक्ट, ठीक है? जस्ट आपको क्या करना है, लेक्चर 16 और 17 एक थ्योरी है, एक में केवल सीखना है, वॉच करना है, और दूसरा काम कुछ नहीं दे रहे हैं। नाउ ब्रिंजल, यू वांट टू आस्क समथिंग? यस सर। बोलो। सर जैसे हमने शेयर वॉल प्रोवाइड की है ना, तो उसमें सी टाइप की शेयर वॉल प्रोवाइड की है, हाँ, तो उसमें ना जैसे सेंटर पॉइंट मिलना चाहिए ना, वैसे सेंटर पॉइंट नहीं मिलता है, तो रेंडमली कैसे फिर रखेंगे, ऐसा और होता है? उसको ड्रॉ कर दो, सी टाइप का मत यूज करो, अपना खुद ओके। का शेयर वॉल ड्रॉ कर दो, तो वो सबसे बेटर रहता है और वो परफेक्ट आता है। जो वाला आता है ना, उसका थोड़ा सा ऐसे इधर उधर रहता है, ठीक है? जो बना बनाया तुमने यूज किया होगा ना, टेम्पलेट यस वाला, यस सर। ठीक है? तो अगर खुद का बनाओगे तो वो थोड़ा सा कैसे ड्रॉ कर रहे हो खुद से, तो तुम्हें जैसे आवश्यकता है उस हिसाब से ड्रॉ कर लोगे, ठीक है? ओके सर। ओके। ओके, ठीक है। एंड चलिए, ठीक है। एंड गाइस, आप में से जैसे कि, ठीक है, ब्रिंजल एक बार आप कल मुझे मैसेज करिएगा डे में, भाग्यश्री आप भी ओके सर। मैसेज करिएगा, तो थोड़े से कुछ मेरे दिमाग में है आपके लिए, बताऊंगा मैं आपको, ठीक है? ओके सर। ओके जी। तो गाइस आज हम लोग कुछ भी ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, ठीक है? आराम से आप करेंगे, कोई देखिए जल्दी नहीं है हमें, लेकिन ऐसे है कि जो सीखे ना एकदम कॉन्फिडेंस आ जाए कि यार कुछ तो सीखा हुआ है। जैसे कि मैं कुछ लोगों के लिए प्राउडली बोल सकता हूँ कि हाँ इन्होंने सीखा हुआ है, बट कुछ लोग साथ है, आपका अब नाम नहीं लूंगा, नहीं तो आपको लगेगा अरे सर मेरा नाम तो माइनस में जा रहा है। आपको खुद पता है कि जब हम बोले ई टैब्स,
तुम्हारे अंदर से निकलना चाहिए यार आता तो है, स्टैट परफेक्ट आता है, ये जो वर्ड है ना ये वर्ड आने लगेगा तो होने लगेगा। और इसके लिए कंपनियों में कंटिन्यू अप्लाई करिए, दिवाली के बाद बहुत ओपनिंग निकलेगी। दिवाली के बाद क्या होता है गाइस, बहुत। हाँ जी फिरोज बोलिए। सर मैं एक इंटरव्यू के लिए थोड़ा